यकीनन ये भी सोचना है कि इस वक्फ कानून के बाद हमारी मस्जिदें खतरे में पड़ जाएंगी, हमारे मदारिस खतरे में पड़ जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान और हमारे जितने जायदादें वो सब क्या है खतरे में पड़ सकती हैं। और ये गहराई के साथ मुझे और आपको समझना है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में पूरे मुल्क गिर सतह पर हम इस कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आप भी इसी मकसद से आए हैं। और मेरा एहसास है कि जंग अब शुरू हुई है और अब हम आज इस प्रोग्राम के बाद इस सिलसिले को उस वक्त तक जारी रखना है जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। यकीनन जो लोग जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, कुर्बानियां देंगे, वो कामयाब होते हैं। ये तमहीदी बातें रखते हुए मैं इस वक्त हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों से, बिरादरान वतन नान मुस्लिम भाइयों से जो भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है, मैं उनकी खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। मैं उनको शुक्र बजा लाता हूँ कि उन्होंने इस चिलचिलाती धूप में सुबह से यहाँ बैठे रहे और आखिर तक बैठे रहे और हमारी हिम्मत में और हौसले में इजाफा करते रहे हैं। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग चले गए हैं। देखिए ये इज्तिमा, ये रैली कामयाब हुई है और ये जलसा कामयाब हुआ है। अब मुझे और आपको पुरअमन तरीके से अपने घरों को पहुँचना है, अपने दुकानों को पहुँचना है, अपने शहर को, अपने गाँवों को पहुँचना है। उसका ख्याल आप ज़रूर रखें। और यकीनन बहुत ही पुरअमन अंदाज में रैली भी हुई है और जलसा भी मुनक्कद हुआ है। और ये पुरअमन रैली और जलसा होने में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मैं उनकी खिदमत में भी हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यकीनन एक माहौल बनाया, हमारा सपोर्ट किया और इसी तरह वो करते रहे। और मैं उनकी खिदमत में भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई, हमारे बहनें अपने घरों को छोड़कर यहाँ हैं, साथ साथ अपनी दुकानों को भी उन्हें बंद रखा है। हमारी एक छोटी सी अपील पर और इस इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहिरा करते हुए हमारे पूरे ज़िले से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, दुकानों को बंद किए हैं। यकीनन एक बड़ी कुर्बानी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस कुर्बानी के बदले में आपकी रोज़ी रोटी में मज़ीद इजाफा अता फरमाए। और साथ साथ मैं यकीनन तमाम का हदिया तशक्कुर पेश करते हुए और हमारे उन लोगों का ख़ास तौर से इस रैली को और इस इज्तिमा को कामयाब बनाने में हर किस्म की जद्दोजहद किए हैं, कोशिश किए हैं, मेहनत किए हैं, कुर्बानियाँ दिए हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मेरे बाद यकीनन हदिया तशक्कुर आपके सामने पेश किया जाएगा। मैं चंद बातों से अपने बात को ख़त्म करते हुए फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि अमन के साथ अपने घरों को जाएं, किसी किस्म की स्लोगन्स, किसी किस्म के नारे ना लगाएं। और हम जिस किस्म से अब तक मुजाहिरा किया है, इसी तरह आखिर तक हम मुजाहिरा करेंगे, इसलिए कि आने वाले दिनों में भी ये हमारी रैली और इज्तिमा के असरात क्या है समाज पर मुरतब रहेंगे। पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज आज गया है और इसी तरह हम मैसेज देते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। जनाब हामिद उमरी साहब, स्टेट सेक्रेटरी जमात इस्लामी इन कर्नाटका। अब मैं शुक्रिया कलिमात के लिए मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब को दावत दूंगा कि वो शुक्रिया कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन नास व लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु तस्लीम। आपके सामने मौलाना हामिद उमरी साहब ने आप सबका शुक्रिया अदा कर दिया है और फिर मैं आपके सामने हाइल होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप सबका मशकूर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने लब्बैक कहते हुए मुस्लिम फसला बोर्ड का भरपूर साथ दिया और आपको हमेशा साथ देने की ज़रूरत है। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा उस वक्त तक हमारी आवाज़ बुलंद होती रहेगी। सभी हजरात को हमारे अपने जज्बात को बुलंद से बुलंद तर करने की ज़रूरत है और फिर आपसी चपखलिशों और शकररंजियों को ख़त्म करके हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखने और इसे तरक्की देने की ज़रूरत है। जिनको ज़री दिली
सी तकलीफ़ कुछ इंतज़ामिया की वजह से हुई है, तो उनसे मैं सबकी जानिब सबकी खिदमत में मुअद्दबाना मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप दिल को वसी करें और छोटी सी चपखलिश को ख़त्म करके इत्तेहाद और उम्मत की तफरीक को ख़त्म करते हुए उम्मत के इत्तेहाद इत्तेफाक को बुलंद करने की कोशिश करें और हमारे शहर की अमन की फ़िज़ा को और पुरअमन बनाने में आप हम सब का साथ दें और आपके साथ ही से आपकी शिरकत ही से हमारा ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है। हर फर्द काबिल कद्र है, हर एक की कद्र हमारे दिल में मौजूद है। आपके हर फर्द की हर नीयत को हर अमल को अल्लाह देख रहे हैं, फरिश्ते उसे नोट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत में सिर्फ रूई पाकर रहेंगे, अल्लाह से अजर के उम्मीदवार हैं। दुनिया की उम्मीद, दुनिया से हमें लौ लगाने से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा करके अपने लिए अल्लाह ही पर भरपूर उम्मीद रखते हुए अजर व सवाब की उम्मीद रखें। दुनियावी तारीफ को छोड़कर उखरवी तारीफ और उखरवी अजर को पाने की उम्मीदवार बन जाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप सबकी आमद को कबूल फरमाए, आप सबके शुक्रिया को हम भी अल्लाह के दरबार में दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस खुदमात को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिहन व अस्लिह लना मा काना फासिदा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इल्म तौहीद व अमल इख़लास व हुस्नुल ख़ातिमा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीका लक नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, दरगाह के पास शरबत है, वो पीते हुए जाएं। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಜಿಬುಲ್ಲಾ ಸಾಬ್. ಈಗ ನಾನು ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಸಭೆಗೆ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಬಂದೋಬಸ್ತಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯೂ ಸಹಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಏನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಥ ಶಾಂತಿಪೂರ್ಣ ಸಭೆಗೆ ಸಫಲರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಉಪದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದರ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಅವರ ಈ ತ್ಯಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು Welcome to another insightful session at English Speeches. Today, we're diving into a powerful speech delivered by Subramanyam Jaishankar, India's Minister for External Affairs, at the 77th session of the UN General Assembly. Discover how India celebrates its 75 years of independence, the visionary steps under Prime Minister Narendra Modi's leadership, and the country's future pledges. Learn how these points connect to broader global issues like multilateralism, environmental care, and international diplomacy. Madam President, Excellencies,
distinguished members of the General Assembly, I bring to you the greetings of 1.3 billion plus people from the world's largest democracy. They join me in congratulating the President of the General Assembly, Ambassador Csaba Kőrösi, on his election to chair the 77th session of the UN General Assembly. They follow closely developments at the United Nations, reflecting the increasingly globalized nature of our existence. We meet at a challenging time for the world order. This session's theme, a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges, seeks to capture its seriousness. Excellencies, the year 2022 is an important milestone in India's journey towards growth, development, and prosperity. India is celebrating 75 years of its independence, what we call Azadi Ka Amrit Mahotsav. The story of that period has been one of toil, of determination, innovation, and enterprise of millions of ordinary Indians. They are rejuvenating a society pillaged by centuries of foreign attacks and colonialism. And they are doing so in a democratic framework whose steady progress is reflected in more authentic voices and grounded leadership. This new India, under the visionary and dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, is a confident and resurgent society. Its agenda for our centenary will be achieved through the 5 pledges that we committed to on our Independence Day. 1, we are resolved to make India a developed country in the next 25 years. For the world, that creates more capacities for global good. 2, we will liberate ourselves from a colonial mindset. Externally, this means reformed multilateralism and more contemporary global governance. 3, our rich civilizational heritage will be a source of pride and of strength. This includes care and concern for the environment, so ingrained in our traditional ethos. 4, we will promote greater unity and solidarity. This expresses a coming together on global issues such as terrorism, pandemics, or the environment. And 5, we will instill consciousness of duties and responsibilities. This applies to nations as much as it does to citizens. These 5 pledges affirm our age-old outlook that sees the world as one family. We believe that national good and global good can be entirely in harmony. It is this conviction that led us to supply vaccines to over 100 nations. Similarly, our evacuation operations in HADR situations always had room for other nationals in distress. Even as we meet our own development targets, India offers partnerships to our brothers and sisters in Asia, in Africa, and Latin America. And we do so based on their needs and their priorities. Today, the focus is on green growth, better connectivity, digital delivery, and accessible health. Our solidarity is not just in words. You can see them in 700 projects across the world. Madam President, even while India contributes to global betterment, we recognize the sharp deterioration in the international landscape. The world is already struggling with challenges of post-pandemic economic recovery. The debt situation of the developing is precarious. To this is now added the rising costs and the shrinking availability of fuel, of food, and of fertilizers. These,
along with trade disruptions and diversions, are among the many consequences of the Ukraine conflict. The Indo-Pacific, too, witnesses fresh concerns about its stability and its security. And climate events have added an overlay on these mounting anxieties. As we saw in the case of the COVID pandemic, the South will be the most impacted, even if the immediate causes are well beyond. It is imperative that global conversations recognize this deep unfairness. The inequity of vaccine distribution should not be replicated in other domains. Madam President, as the Ukraine conflict continues to rage, we are often asked, whose side are we on? And our answer each time is straight and honest. India is on the side of peace and will remain firmly there. We are on the side that respects the UN Charter and its founding principles. We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and fertilizers. It is therefore in our collective interest to work constructively, both within the United Nations and outside, in finding an early resolution to this conflict. Excellencies, while the global attention has been on Ukraine, India has also had to contend with other challenges, especially in its own neighborhood. Some of them may be aggravated by the COVID pandemic and ongoing conflicts, but they speak too of a deeper malaise. The accumulation of debt in fragile economies is of particular concern. We believe that in such times, the international community must rise above narrow national agendas. India, for its part, is taking exceptional measures in exceptional times. We do so when we send 50,000 metric tons of wheat and multiple tranches of medicines and vaccines to Afghanistan. When we extend credits of $3.8 billion to Sri Lanka for fuel, essential commodities, and trade settlement. When we supply 10,000 metric tons of food aid and vaccine shipments to Myanmar. When we fill the gap in humanitarian needs left unaddressed by political complexity. Whether it is disaster response or humanitarian assistance, India has stood strong, contributing particularly to those nearest to us. Excellencies, the world as we knew it is poised for transformational changes. It has been impacted in recent times by a succession of shocks, each of them significant by itself. The COVID pandemic called into question the over-centralized nature of globalization and has led all of us to seek greater resilience and reliability of supply chains. The repercussions of the ongoing Ukraine conflict have further heightened economic stresses, especially on food and energy. Climate events have added to disruption that the world is already facing. As for the promise of technology, it has certainly multiplied our capabilities, but also added to our vulnerabilities. Trust and transparency are legitimate expectations of a more digitized world. The quest to create a better global order would necessarily have to address all these issues. Among them, some are clearly more existential in nature and necessitate intense coordination by the international community. Climate action and climate justice are particularly noteworthy in this respect. In their pursuit, India has worked with partners on the International Solar Alliance, the One Sun, One World, One Grid initiative, and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. We stand ready
to support any collective and equitable endeavor to protect our environment and to further global wellness. Lifestyle for environment, or LIFE, as declared by Prime Minister Narendra Modi in Glasgow on the sidelines of COP26, is our homage to Mother Nature. India remains deeply committed to fighting climate change under the UNFCCC and the Paris Agreement. We do so on the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of different national circumstances. We have announced our updated nationally determined contributions after COP26. Excellencies, India's steadfast commitment to South-South cooperation is by now well established and well recognized. Our approach is based on principles of mutual respect and national ownership, with a commitment to sustainable development for all. As we begin the G20 presidency this December, we are sensitive to the challenges faced by developing countries. India will work with other G20 members to address serious issues of debt, of economic growth, food and energy security, and particularly of environment. The reform of governance of multilateral financial institutions will continue to be one of our core priorities. Madam President, India would be completing its tenure as a member of the Security Council this year. In our term, we have acted as a bridge on some serious but divisive issues confronting the Council. We have also focused on concerns such as maritime security, peacekeeping, and counterterrorism. Our contributions range from providing technology with a human touch to ensuring safety and security of UN peacekeepers. As the chair of the Counterterrorism Committee this year, India would be hosting its special meeting in Mumbai and New Delhi. I invite all member states to participate in it. We need to create a global architecture that responds to the new tech tools deployed against open, diverse, and pluralistic societies. Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. India has always espoused a cooperative, inclusive, and consultative approach to international relations. We believe that multipolarity, rebalancing, fair globalization, and reformed multilateralism cannot be kept in abeyance. The call for reformed multilateralism, with reforms of the Security Council at its core, enjoys considerable support among UN members. It does so because of the widespread recognition that the current architecture is anachronistic and ineffective. It is also perceived as deeply unfair, denying entire continents and regions a voice in a forum that deliberates their future. India is prepared to take up greater responsibilities, but it seeks, at the same time, to ensure that the injustice faced by the Global South is decisively addressed. Our call is to allow serious negotiations on such a critical matter to proceed sincerely. They must not be blocked by procedural tactics. Naysayers cannot hold the IGN process hostage in perpetuity. In these turbulent times,
it is essential that the world listens to more voices of reason and experiences more acts of goodwill. India is willing and able on both counts. We believe and advocate that this is not an era of war or of conflict. On the contrary, it is a time for development and for cooperation. Madam President, in the past, this august assembly has served as a meeting point of views and as a catalyst for action. It is vital that we continue to believe in the promise of diplomacy and the need for international cooperation. Therefore, Madam President, let us strive to return to the course of seeking peace, progress, and prosperity. I thank you. Visit our site, EnglishSpeechChannel.com, for exclusive access to video transcripts, offline audio, English lessons, and private classes. Don't forget to explore our free and new ebooks. Also, subscribe to our weekly newsletter for the latest updates. Links in the description below. Thanks for your support. India's development, demography, and demand provide a unique long-term opportunity for Australia, and all in the familiar framework of democracy. I stand here as one of you, a representative of the people. I came to you with the greeting of 1.25 billion people of a nation that is linked to the Australia by the great Indian Ocean, by our connected history and our many shared inheritance, and even more by our deeply interlinked destinies. And today, I have come to unite in the spirit as we were once by geography. The spirit that is fed by many stirring stories of human success and sacrifice. This morning, Prime Minister and I honored our soldiers who 100 years ago made the supreme sacrifice together in the Battle of Gallipoli. The man who designed this beautiful capital of Canberra, Walter Burrell Giffin, lies buried in the old city of Lucknow in India. More than 150 years ago, an Australian novelist and lawyer, John Lang, fought the legal battle for a brave Indian freedom fighter, the Queen of Jhansi, Jhansi Rani Lakshmibai, against the British East India Company in India's first war of independence. He also lies buried in the Indian hill town of Mussoorie. The statue of Gandhi in Canberra is a symbol of our shared values. We celebrate the legend of Bradman and the class of Tendulkar together. We are impressed by Australian speed as you charmed by the Indian spin until, of course, Shane Warne came along. But above all, we are united by the ideals of democracy. Today, as I stand
In this temple of democracy, I consider nations such as ours to be blessed because democracy offers the best opportunity for the human spirit to flourish. Because we have the freedom to choose, the right to speak, and the power to remove. And for us, in politics, with no option but to live with this grace. Generations of peoples, representatives have made Australia one of the great nations of the world today. From the vast strength of territory to the abundance of resources, nature has been generous to you. But it is the people of Australia who have made Australia what it is today. I beckon of democracy and rule of law, a nation that willingly leads the search of lost aircrafts, one of the most prosperous nations in the world. Among the best in Human Development Index, a nation with some of the best cities in the world, some of the most productive farms and mines, some of its best universities and research centers, an advanced technology base, and a nation with great sporting skills. Australia evokes images not just of immense beauty, but also of a great quality of life. Today, its cities are alive with the richness of this world's diversity, and it is home to 450,000 Indians who are as proud to be part of Australia as they are of their Indian heritage. Honorable members, there was a time when for many of us, Australia was a distant land on the southern edge of the world. Today, the world sees Australia to be at the heart of the Asia-Pacific and Indian Ocean region. This dynamic region holds the key to this world's future, and Australia is at its crossroad. And as Australia has become more engaged in this part of the world, we welcome its growing role in driving this region's prosperity and shaping its security. Because we in India seek the same future for this world. We also see Australia as a vital partner in India's quest for progress and prosperity. There are few countries in this world where we see so much synergy as we do in Australia. India, a nation of more than 1 billion seeking development. Australia, a developed country of a few million people and vast resources. Since the turn of this century, India has been the second fastest growing economy in the world. Millions have lifted themselves out of poverty into a new life of possibilities. Today, we have a government with a clear majority after 30 years. From the remotest village
to the biggest cities, there is a new high tide of hope in India, a new energy. It is the energy of our youth. The 800 million people below the age of 35, eager for change, willing to work for it, because now they believe that it is possible, that they can make it happen. It is this force of transformation that will unleash. In these 6 months that we have been in office, we have moved forward thinking with ambition, acting with speed, seeking growth, not just for growth, but to transform the quality of life of every Indian. I see Australia as a major partner in every area of our national priority, providing skills and education to our youth, a roof over every head and electricity in every household, the most affordable health care for the most difficult disease, the next generation of infrastructure that does not take a toll on our environment, energy that does not cause our glaciers to melt, clean coal and gas, renewable energy or fuel for nuclear power, cities that are smart, sustainable and livable, villages that offer opportunities, agriculture that yields more, and farms that are better connected to markets, practices and technology that save water. We have a new mission for turning Made in India into a global name, just as computer in India is. But we want to find new pathways to prosperity, not simply travel down the roads of the previous century. Much of India's future cities and infrastructure is yet to be built, and so we have a unique opportunity to make our choices now. And in every sector, agriculture, food processing, mining, infrastructure, finance, and technology, energy, from providing funds and resources to technology and expertise. Working as partners and investors, Australia has immense opportunities to participate in India's progress. In turn, India will be the answer to your search for new economic opportunities and your desires to diversify your global economic engagement. Your source for world-class skills at home or for a manufacturing location abroad. India's development, demography, and demand provide a unique long-term opportunity for Australia, and all in the familiar framework of democracy. There is no other example of this nature in the world. Indian investors too are coming here in growing numbers and commitments. Honorable members, this is an age rich in promises, but also filled with challenges.
We can only pursue our dreams if we have the confidence that our cities are safe, our nations are secure, our region is stable, and our world is peaceful. This vast region has many unsettled questions and new challenges. Historical differences persist despite growing interdependence. The ocean are our lifelines, but we worry about our access and security in our part of the world more than ever before. Our region has seen huge progress on the foundation of peace and stability. But we cannot take this for granted. Preserving it will be the most important task in the region. India and Australia can play their part in it by expanding our security cooperation and deepening our international partnerships in the region. But we do not have to rely on borrowed architecture of the past. Nor do we have the luxury to choose who we work with and who we do not. But what we do need is to work together and with others to create environment and culture that promotes the currency of coexistence and cooperation, in which all nations, small and big, abide by international law and norms. Even when they have bitter disputes, we should collaborate more on maintaining maritime security. We should work together on the seas and collaborate in international forums. And we should work for a universal respect for international law and global norms. We must also support the process of economic integration across the region and an open globe trading system that remains integrated. We must guard against regional trade initiatives becoming instrument of political competition. However, economic integration by itself would not be a strong basis for peace and stability. Without strong regional institutions, India and Australia are members of several institutions that are critical for the region and the world. We should coordinate more closely in East Asia. Summit, G20, and the Indian Ocean Region Association. Honorable members in our interconnected world, our shared challenges extend beyond our region. Terrorism has become a major threat for us all. In India, we have seen its face closely for 3 decades, and we see it with the clarity that comes with it. Terrorism is changing in character and expanding in its reach. Internet has made recruitment and call to violence self-generated. It also feeds off money laundering, drug trafficking, and arms smuggling. We have to deepen
our bilateral security cooperation. But we need a comprehensive global strategy for a global problem. It will require closer security cooperation, but even more, a policy of no distinction between terrorist groups, of discrimination between nations. A resolve to isolate those who harbor terrorists, willingness to empower states that will fight them, a social movement against extremism in countries where it is most prevalent, and every effort to de-link religion and terrorism. As I look to the future, we would also need to ensure that outer space and cyberspace remain instruments of connectivity and prosperity, not new frontiers of conflict. Responding to the region's disasters, combating proliferation, acting against piracy, we work together on a full range of security challenges. Honorable members, since my government entered office, no region has seen more intense engagement on India's part than the Asia-Pacific region, because we understand how deeply our future is linked to this region. India and Australia can play cricket hard with each other, and I suspect we will next month. But we see Australia as one of our foremost partners in the region. I was pleased to host Prime Minister Tony Abbott as my first state guest in September. It has taken a Prime Minister of India 28 years to come to Australia. It should never have been so. And this will change. Australia will not be at the periphery of our vision, but at the center of our thoughts. So we stand together at a moment of enormous opportunity and great responsibility. I see a great future of prosperity, partnership between India and Australia, and a shared commitment to realize it. Prime Minister Abbott started us on this new journey. In September, I've come here to set our two countries more firmly on that course. With your help and with the help of the great people of India and Australia, I wish you the best for hosting great and successful World Cricket early next year. Thank you all. Thank you very much. Thanks a lot. आज सीडब्ल्यूसी में 2 प्रस्ताव पारित किए गए और पहले प्रस्ताव पर
चन्नी जी आपको जानकारी देंगे। चन्नी जी। मैं सभी प्रेस के भाइयों का स्वागत करता हूं। आज खड़गे साहब के नेतृत्व में CWC की मीटिंग हुई है, जिसमें ये पहलगाम पे दूसरी मीटिंग है। पहले भी CWC की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सरकार को आश्वासन दिया गया है कि हम कांग्रेस पार्टी इस विपदा की घड़ी में सरकार के साथ है। सरकार जो भी डिसीजन लेगी, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को खत्म करने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और जो वहां निर्दोष 26 लोग मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि भेंट की गई है। पहले मीटिंग में भी ये एक बहुत बड़ा संकट है, और ये जो संकट आया है, इसमें जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उनको देखने की जरूरत है। हमें चिंता है कि बार बार ऐसे वाकया क्यों हो रहे हैं। बहुत ही कीमती जाने 26 जाने गई हैं, उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करे, उनके परिवार को आगे तक कैसे बढ़े उसका ध्यान देने के लिए सरकार आगे आए। ये भी आज डिमांड रखी गई है। आज सरकार की जो क्षमता है, जो कॉम्पिटेंसी है, उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। देश में सिक्योरिटी को कैसे रखना है, उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए सरकार की क्षमता पे, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की काम करने की क्षमता पे आज शंके खड़े हुए हैं। और आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान जैसे देश, हमारे जो दुश्मन देश बन गए, जो आतंक फैला रहे हैं इस तरफ, आज 10 दिन हो गए हैं, 26 जाने गई हैं, नाम पूछ कर मारा गया है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। सो हम मांग करते हैं कि सरकार आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी यूनाइटेडली, पूरा देश आज सरकार की तरफ देख रहा है, सरकार के साथ है। सरकार क्या कर रही है, आज तक कोई इसका सुराग नहीं मिला है। सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करे जिन्होंने आतंक फैलाया है, जो दूसरे देश से आकर, जो दूसरे देश की चाल है, जो उनकी हमारे प्रति घृणा एक आतंकवाद के रूप में दिख रही है, उसको सरकार क्या जवाब दे रही है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो हम सरकार के साथ हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी कमिटेड है देश की एकता और अखंडता के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, देश की आजादी लेकर आई कांग्रेस पार्टी, देश को एकता, एक माला में परोकर रखा है। आज जो ये बार बार आतंक की घटनाएं हो रही हैं, आज लोग 56 इंच की छाती को उड़ीक रहे हैं कि वो कब कार्रवाई करेगी। सो हम मांग करते हैं सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और रिजल्ट दे देश को। और जो आदमी, जो हमारे सैलानी वहां निर्दोष मारे गए हैं, उनके परिवारों को सहानुभूति दे, उनको, उनके परिवारों की रक्षा के लिए और उनके परिवारों की आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए मुआवजा और उनकी रिहेबिलिटेशन के सरकार काम करे। धन्यवाद जी। दूसरा प्रस्ताव आज जो पारित किया गया है वो सामाजिक न्याय को लेकर है,
उसके बारे में आपको सचिन पायलट जी बताएंगे। धन्यवाद जयराम जी। साथियों, कार्य समिति की बैठक लगभग 2 घंटा चली और उसमें दूसरा प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है वो सामाजिक न्याय को लेकर है। हाल ही में भारत सरकार ने एक घोषणा करी कि जो सेंसस होगा उसमें जाति जनगणना को वो इंक्लूड करेंगे। उस पर विस्तार से जो प्रस्ताव है वो आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन जो मूल मुद्दे थे उसका सारांश मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हम सबको ज्ञात है कि कई सालों से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत प्रखर रहे और तमाम विरोध के बावजूद पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी भाजपा की केंद्र की सरकार, भाजपा का नेता सालों तक इस माहौल को निर्मित करने में व्यस्त थे कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की जो मांग है अव्यवहारिक है। और एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था, बटोगे तो कटोगे, और अर्बन नक्सल कहा गया कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी जी को। वही दल, वही सरकार जो 11 साल से शासन में है, उन्होंने जातीय जनगणना को देश समाज के लिए एक जहर की संज्ञा भी दी थी। आज जनता के दबाव के अंदर और कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के लगातार संसद के अंदर, संसद के बाहर इस मांग को करने पर यह समझ गई केंद्र की सरकार कि जनभावना आज कांग्रेस के साथ है। इस देश की अधिकांश जनता भागीदारी चाहती है और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा ये सिर्फ एक जनगणना नहीं है, ये एक पारदर्शी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से देश की अधिकांश जनसंख्या किन हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। क्योंकि भारत और राज्य सरकारों का जो बजट है, उस बजट का आवंटन, नीति निर्माण करना, सहयोग समर्थन देना अभी सिर्फ अंदाजे के साथ किया जाता था। कोई जवाबदेही, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और सरकार मनमाने तरीके से जहां चाहा वहां बजट, पैसा और योजना लगा दी। अब हमने मांग करी है कि बिना समय खोए, क्योंकि सरकार जुमले देने की बहुत आदी है, महिला आरक्षण पर एक जुमला दिया हुआ है, न जाने कब वो लागू होगा, तो हमने मांग रखी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि एक समयबद्ध सीमा बांधकर आप कार्य करें और जो जनगणना हो उसमें जो आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे उसमें साइंटिफिक तरीके से किया जाए, पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि किसी को आशंका ना हो। और हम लोग चाहते हैं कि सर्ववर्गीय समाज, पूरे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो कोई हिस्सा पीछे नहीं छूटना चाहिए। और खरगे साहब ने 2023 में एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, उसका कोई जवाब नहीं आया। और मैं बार बार इस बात को रेखांकित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संपूर्ण पार्टी बीजेपी ने इस मांग को ठुकराया और तरह तरह की बातें बोलकर इस बात को स्वीकार करने से इनकार किया था। आज जिस भी दबाव के तहत, मैं मानता हूं ये कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस के नेताओं का और जनता का दबाव था कि प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। जैसे 3 कृषि फार्म लॉज वो लेकर आए थे, वो पीछे खींचने पड़े, लैटरल एंट्री को उनको पीछे हटना पड़ा। ये मैं समझता हूं समय की पुकार थी और पूरा देश इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं बिना समय खोए भारत सरकार ये घोषणा करे कि कितने समय में ये जनगणना पूरी होगी और क्या मापदंड तय किए जाएंगे, क्योंकि जवाब उतना ही महत्वपूर्ण, से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो सिर्फ आंकड़े नहीं, हम पूरी अर्थव्यवस्था को, उनका पूरा जीवन शैली, शैक्षिक योग्यता, नौकरी, संसाधन, बजट, पैसा, किसको कितना समर्थन मिलता है, नहीं मिलता। और जिस संज्ञा को राहुल जी बार बार बोलते हैं, एक एक्सरे होना चाहिए। एक्सरे होने के बाद हम लोग सही तरीके से भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, समर्थन, आयोजन, बजट, पॉलिसी इंटरवेंशन टारगेट कर सकते हैं। और ये मैं समझ